Thank you so much for joining us. I'm Namrata, and on behalf of Level Up, I'm thrilled to kickstart today's Open Tech seminar. Uh, as we all know, that starting a career in tech can feel like standing at the foot of a giant mountain. That's why we started Level Up to bring in the best mentors to show you the path. Tonight is all about the curiosity. So, if you are a beginner, you are exactly where you need to be. So, to help us navigate through tech world today, we have someone truly special, Alok Kumar. Mr. Alok Kumar is an IIT Kharagpur alum and the co-founder and CTO of Karza Technologies. Now, those are big titles. But here's what they really mean. Alok is a master at taking complex math and turning it into software that helps businesses every day. He's been recognized in the Fortune 40 under 40 list because of his vision in AI and data science. Alok, we have a lot of aspiring developers and students here today who are eager to learn. Thank you so much for joining us to share your story and your expertise. The virtual floor is all yours now. Yeah. First of all, to thank you so much, Namrata, for the beautiful thoughts about myself. Okay. Hey everyone. I think Namrata, can I share my screen also, if possible? Yeah, yeah, sure. Okay. Just one minute. Hello. 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 Yeah. Okay. Great. Hey everyone, myself Alok. Right now I am as MTS in MITS Academy under the Outsource Pro. This company basically is software development. Okay. So today's Namrata, can I start? Yeah, yeah, please carry on. Yeah. Okay. Okay. So today's session is about the Git and GitHub. So we discuss about what is Git and what is GitHub. Basically, we know that all the in all the development zone that is the things that are the very important for the development point of view as a developer. So we know about what is the git and what is the similar between the git and github कि actually दोनों सेम होते हैं या both are the different. So we are discussing the first things, git. तो बेसिकली वी जस्ट टू एलोबरेट अबाउट ना कि हम ना इसको कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स से कनेक्ट करके चीज़ों को समझेंगे कि गिट एक्चुअली करता है क्या, क्या प्रोवाइडेबल करता है, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि व्हाट इज द गिट. गिट इज a simple thing कि a version control system like that the smart tool that the people's, yeah, any organization can help to build a project, especially for a programmer, like in a field of the CSE या IT या in a field of computer programming domain. इट्स बेसिकली गिट करता क्या, एक्चुअली गिट का काम होता क्या. तो वी नो अबाउट ना कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस प्रोग्राम को चाहते हैं कि ये लोकली सर्वर पे रन करे. एक्चुअली मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा यही रहेगा कि हमें उसको कहीं ना कहीं रन अप करना है. तो दैट इज द थिंग कि हमें उसको कहीं यूजल कर सकें. तो द फर्स्ट थिंग आउट की गिट. तो गिट का बाइंड अप आता है कि आप कोई प्रोग्राम को बना रहे हो, कोई कोड आप कर रहे हो, उस कोड को आपको ट्रैक करना होगा. इट्स हेल्प टू ट्रैक योर कोड. बेसिकली कि जो आप चेंजेस कर रहे कोड के अंदर में, जो आप ब्रांचेस बना रहे, वी हैव डिस्कस कि ब्रांचेस क्या हैं, क्रिएट ब्रांचेस कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, पुश एंड पुल कैसे करते हैं. तो दैट इज द थिंग दैट वी आर आल्सो डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. बट द थिंग, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गिट एंड गिटहब क्या सेम है या मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइक अ सिमिलर. uh, that is the two main factor that we said कि no, git and github is the one thing but different usability. git एक्चुअली एक वर्जन कंट्रोल टूल है, बट गिटहब एक आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
आपको मैं एक सिंपल सा प्रोटोटाइप देके बताता हूँ। इन केस आपके पास एक फोटोग्राफ लाइक कैमरा है, तो कैमरा से जब आप क्लिक करते हो, कोई भी लाइक आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इन केस आपने कोई फोटो क्लिक किया, तो कैमरा इज अ गिट। एंड जो फोटो मिला, जहाँ पे आप फोटो को एक स्टोर कर रहे हो आप अपना एल्बम, वो हुआ आपका गिटहब। तो एल्बम के अंदर में आपने क्या किया, फोटो के स्टोर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड hosting platform like a GitHub. Then we have discussed कि what is Git. Then we have also last time हमने डिस्कस किया था कि GitHub एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे हम अपने कोड को ट्रैक कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स को हम वहाँ पे लोकली रन करके चीज़ें देख सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू कि um, क्या गिट मतलब लाइक कि ओपन सोर्स है और गिटहब क्या ओपन सोर्स है, दोनों ओपन सोर्स है? नो, गिट इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे बाय लिनक्स इसको हैंडल करते हैं, बट गिटहब इज माइक्रोसॉफ्ट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट कैन हैंडल इट। तो एक्चुअली आपको गिट लोकल सर्वर पे चला पाओगे आप, बट गिटहब के लिए आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। बट गिट के लिए कोई प्रोफाइल क्रिएटिबिलिटी या कोई भी क्रेडेंशियलिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। दैन नेक्स्ट थिंग इज की रिपोजिटरी क्या है। तो बेसिकली एक रेपो, व्हेन यू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फर्स्ट स्टेप कि आप पहले अपना रेपो क्रिएट करते हो, देन यू गो द ब्रांचेस, देन यू अपलोड योर प्रोजेक्ट एंड मल्टीपल थिंग्स दैट यू डू दैट थ्रू द गिटहब। आप यहाँ पे गिट गिट के थ्रू आप अपने कोड को गिटहब पे स्टोर करते हो। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे भी इसके रिगार्डिंग कि हम कैसे अपने कोड को एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, देन वी कैन हाउ कैन इनिशियलाइज आवर गिट, गिट को पुश कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को। देन द नेक्स्ट थिंग अबाउट ना गिट और गिटहब, तो वी हैव ऑलरेडी नो कि गिट एक टूल है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और गिटहब हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने कोड को या प्रोजेक्ट को स्टोर कर रहे हैं। लाइक दैट हमने डिस्कस किया था कि एक कैमरा हुआ, जो फोटो क्लिक कर रहा है, अब फोटो क्लिक करके जो आ रहा है हमारे पास उसको हम स्टोर कर रहे हैं एल्बम में, तो हमारा वो गिटहब हुआ। देन नेक्स्ट थिंग है ब्रांच। ब्रांच क्या, तो वी हैव सिंपली सेट कि अगर हम कोई क्रिएट करते हैं, गिट क्रिएट करते हैं, एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, देन रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद देन देयर आर द मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग ऑन अ सिमिलर कोड। तो हमने वहाँ पे दो टाइप्स के, एक ब्रांच, एक मेन ब्रांच हो गया, एक मास्टर ब्रांच हो गया आपके अंदर में। देन सिंपली वी क्रिएट अ सिंपल अ ब्रांच जहाँ पे हम उस ब्रांच के अंदर में अपने गिट को पुश कर रहे हैं। लाइक कि दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इनकेस आपको एक प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट को चाहते हो कि पहले हम इसको लोकली रन करके चेक करें कि क्या हमारा इस सिस्टम पे अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन हम इसको मेन ब्रांच में पुश करेंगे। लाइक कि हमारे पास एक अपना खुद का पोर्टफोलियो हो गया और हमने उस पोर्टफोलियो में 10 से 15 चीज चेंजेस कर दिए, बट इसको लाइव सर्वर पर लाने से पहले हम चाहते हैं कि हम इसको चेक कर लें प्रॉपरली कि ये स्टेबिलिटी से चल रहा है या नहीं चल रहा। देन वी हैव जस्ट क्रिएट अनदर ब्रांच, और उस ब्रांच के ऊपर हमने उस अपने कोड को एग्जीक्यूट किया। देन मेन ब्रांच से जाने से पहले भी लाइक दैट मेन ब्रांच जाओ डोमेन, और अदर ब्रांचेज लाइक अ सब डोमेन, पहले हमने सब डोमेन पे क्रिएट करके चलाया, देन वी गो थ्रू द अनदर, देन वी एग्जीक्यूटेड आवर कोड, एंड देन अगर सक्सेसफुली रन है, देन हम वहाँ पे गिट को पोस्ट कर देंगे कि हमारा मेन ब्रांच पे चल रहा है। तो ऐसे एग्जीक्यूशंस वहाँ पे हो रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज कमिट। I have in multiple times in my session I have already told lots of the student कि हमें git को 5 कैटेगरीज में समझना चाहिए। फर्स्ट git init होता है, git add, git commit, git push, git pull। there is the 5 things। so first git initialize। git initialize आपको करता है कि रेपो को आपको स्टार्टिंग देता है कि हाँ अब हमारा ये प्रोजेक्ट हुआ, अब हम इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं। देन git add डॉट, गिट ऐड करता है कि उस स्टेज पे चेंजेस हमें करने हैं कि अब हमारा उस स्टेज से स्टार्टिंग हो रहा है। देन गिट कमिट,
हमने क्या कमिट किया इन केस की अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो कोई नाम भी होगा हमारे पास, एक बड़ा सा एक पोर्टफोलियो ही हमने लिया। देन वी हैव डिस्कस की द लॉट्स ऑफ मेन्यू लाइक द अबाउट अस एंड प्रोजेक्ट समरीज and your portfolios and home in your lots of the section like that which we are changing in a portfolio section, and we have add multiple project. I've already added on multiple project, but we have added another new project like we are adding our new project. So we just to commit के अंदर में we have add git commit message के अंदर में mention कर देंगे कि हमने एक नया project इसको add किया। then after we just uh, लाइक राइट अ कोड गिट पुश। जैसे हम गिट पुश करेंगे देन आफ्टर हमारा वो गिट पुश हो जाएगा। द गिट कमिट इज ट्राइंग टू मेंटेन योर मैसेज कि आप क्या अपने चेंजेस कर रहे हो, आपने क्या उसमें अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, आपने क्या प्लान रहा, एक प्रोजेक्ट प्लान यू आर एडेड ऑन इट कि हमने ये चेंजेस इस कोड के अंदर में किया कि इन फ्यूचर आपको ये इंफॉर्मेशन बता पाए कि हाँ हमने ये चीज चेंजेस किए। देन वी हैव रिमाइंडर इट कि हम इसको अगर रिवर्ट बैक कर रहे हैं या कोई चेंजेस कर रहे हैं, देन वी नोटिस इट कि हाँ हमें इस टाइम पीरियड को इस एग्जीक्यूशंस के अंदर में इस गिट इस कोड को कमिट किए हुए थे। तो मैसेज के थ्रू गिट कमिट के थ्रू हमें वो मालूम चल जाएगा। देन वी रिवर्ट बैक ऑन previous code। then another thing is git push। दिस सिंपल थिंग इज गेट पुश कि कोई चीज हमने इन केस हमने बनाया, देन वी हैड कि अब इसको हम जाने की भेज दें आगे की तरफ चला जाए। we just to click on a git push command in a github a git to upload your local commit to changes to remote repository। जो ऑलरेडी आप repository क्लिक किए हुए हो, जस्ट आपको क्लिक कर देना है कि git push आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए प्रॉपर्ली ऑन अ गिटहब के ऊपर, आपकी गिटहब होस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो इट्स लाइक अपलोडिंग योर वर्क, जो आप काम किए हो अब तक, जितने चेंजेस आपने अपने कोड में किया, प्रोग्राम्स के अंदर में किया, यू हैव जस्ट टू सबमिट टू गिटहब कि हाँ हमारा काम डन हो गया, अब हम इसको अपने कोड के अंदर में चेंजेस डन करते हैं, फाइनल इट करते हैं। Then another thing is the git pull. The git pull is the command that used in a git to synchronize to changes the made by others in your code. It's a merging the two code space in a one. Like that, na? The multiple peoples in a work in a single project. That time we are trying to no conflict to each other. तो so is just to like ना कि हम भी काम कर रहे हैं, the second person भी एक काम कर रहा है। वी आर ट्राइंग कि हमारे अंदर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मर्जिंग प्रोसेस ना हो। तो इन केस आई एम वर्किंग माई वर्क, देन आई विल सेंड द दैट पर्सन कि आप इसको आप गिट पुल कर दो रिव्यू करके। देन आफ्टर वी चेक द ऑल द कोड प्रोसेस किया एग्जैक्टली ये सही है, लोकली वी आर रन ऑन इट, देन एग्जीक्यूट हम उसको कर देते कि अब सही है, तो गिट पुल हम बस कर देंगे। देन वो हमारा मेन ब्रांच के अंदर में मास्टर के अंदर में वो चेंजेस हो जाते हैं कोड। and this is the workflow about the GitHub। and I have also discussed कि Git क्या होता है already। then GitHub के बारे में एक चीज that I have already mentioned on it कि GitHub is not only about hosting या store your platform right now। in a today's era, I think GitHub is more versatile and more AI functionality। Right now, GitHub, I think ये पुराना workflow है, but right now GitHub is adding the multiple features on their platform, like that you are code editors adding on it, and thus you like a prompt, written a prompt key, this is my code program and this is the executions code, can you fix this code in a this things, like that कि आपको executions नहीं हो रहे, कोड रन नहीं हो रहा है, मल्टीपल फीचर्स में बग्स आ रही है, तो सिंपल्स आप कोड के अंदर में गिटहब एजुकेशंस का प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइडेड किया हुआ है, जस्ट टू मेंशन ऑन इट एंड देन change the all the things in a single prompt, लाइक दैट कि आपने एक छोटा सा मेंशन कर दिया कि हमारे ये कोड है एंड दिस इज द बग, कैन फिक्स इट, एंड देन he just a small prompt and then fix it। So that is called a workflow about the whole
GitHub. Basically, GitHub is the hosting platform in initial days, but right now it's just to a platform that you build your project, host your project, and do everything that you fixed through the GitHub. Then we have go the another section कि what is the GitHub को how can I understand कि GitHub क्या like that ना कि हम एक सपोज करते हैं कि हम एरोप्लेन में लाइक दैट कि हम एरोप्लेन में हमें जाना है, ठीक है। तो इनकेस प्रोसेस क्या होता है, हम बोर्डिंग करने के टाइम पे मान लीजिए बोर्डिंग कर ली, इनकेस हम स्टैंड के पास गए, हमने इंटर कर लिया कितने लोग हैं, हमारा डन हो गया कि 50 लोग उस स्टैंड पे बैठ चुके हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है। देन गिट पुश मतलब अब हम इसको डाल चुके हैं कि वहां तक अब वो स्टार्टिंग हो जाए। देन वी हैव एडेड ऑन इट गिट पुश, तो वो बोर्डिंग करके आगे की तरफ निकल गया। देन गिट कमिट मतलब गिट कमिट की मतलब हमारा सिंपल से हुआ कि वो अब हमारा उस पोर्शन पे पहुंच गया कि हाँ इतने लोग थे, इतने अनबोर्डिंग हो गए, मतलब जितना हमने स्टार्ट किया था लाइक हमारा उतने गिट कमिट्स के अंदर में फिल आउट हो चुके हैं। तो गिट कमिट इतने हो गए, देन आफ्टर द गिट पुश मतलब उस जितने लोग थे सुरक्षित ऑन बोर्ड कर गए, मतलब चेकआउट कर गए। Then quick demo about the things ki how can we just set up about the Git and GitHub. Okay, so we just to discuss ki how can git initialize, git add, git commit, and git push and git pull. So first of all, we start from the now how can run our project. So this is my project about the smart issue board, about the a bus system that can find a bug and we just to enter about the bug and details key. This is our bug. Okay, so we just to start a new press console git bash. Okay, so we just to start git init. This is how the first step git initialize our project. So we have just seen git initialize, then after the initialize the empty git repository in C user program name Alok slash OneDrive slash desktop project and जहाँ पे मेरा projects होंगे जो नाम that is show on it. Okay, then after we have changes on it, so right now we have no changes anything like that. Okay, so I just changes about now git issue board. Okay, तो यहाँ पे मैं just to mention on it, a smart issue board and bus system. ओके, we just to save us our project कि हमने ये चेंजेस अभी इसमें किए एंड वी हैव चेंजेस कि ये चेंजेस वहाँ पे है अवेलेबल्स है या नहीं। ओके, तो वी जस्ट टू स्टार्ट ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे चेक कर लेते हैं कि हमारा लोकल सर्वर पर कैसा दिख रहा है। ओके, तो वी हैव जस्ट स्टार्ट npm run dev, so this is our locally run project. Okay, yeah, I think it's a visible. It's a small. Just npm run dev. We uh, we are adding the node module in our project. Npm run dev. It's a small secret.
Okay. So this is our title byte project. Okay. Just we change here the detail about the title. In case Alok. Okay. Sharma. We just change on it. That is the locally. So I think here is the smart decisions. Okay. We just to create the another project file. Okay. Just a 1 minute. Okay. We create another project and fresh project. Then we execute all the code on a similar platform. Okay. So we create a new repository and we add on it anything like that. So we just name about now Git and GitHub. Okay, GitHub. So we just to add on, no description needed, just to readme file add on it. So this is our create the projects. ओके या तो हमारा एक रेपोजिटरी क्रिएट हो गया राइट नाउ दिस इज आवर रेपोजिटरी लिंक एंड दिस इज आवर द git clone का लिंक ओके so we just to add our new project through the github so we have already downloaded the 2 and 3 projects and then we have execute on it so we have just 1 minute. Then again, mix is not needed. Client project file is already project is already have done. Translate AI. Yeah, we have translate AI project. Then we are executing on it. We just to copy this project and execute on it. Okay. So we just to add open folder and desktop projects translate AI. Okay, then try to add on it anything. Okay, yeah. I think this project is run properly. Yeah, yeah, good. This project is work properly. So we just to add on it the GitHub and then we try to execute on it कि क्या है properly चल रहा है या नहीं. Okay. So this is how the front end part. So we just to execute on it the git init and git add and git commit and git post. So we just to create another git bash console
and we have tried to change all the another things like that. We have changed this name about Git translator AI, remove it, and just we are adding on it Git and GitHub. So okay, this is our the changeable name, and we are adding on it to remove the copies and paste the everything where we are adding on it. Titles name is also we are want to change on it, so we just to change on that. Okay, so we just to save it, and then we try to know git init to initialize our project, get git add dots. So we are adding our project, git add, git commit, then hyphen m, control the message. The change name is our project title. So we are changing our project title name. Okay, so we are changing our project title name. We just to click on it, then we have just click git push, then successfully if execute on it or not. So here is the failure कि we are not properly execute our code git push. So we are trying कि git push hyphen hyphen force we are trying to merge on our code on execute on it. So git for push hyphen hyphen force to forcefully execute our code on a GitHub platform. GitHub is our the hosting platform that we are host our code. So we just to check on it now. npm run dev. Just we click on it now. Then we have seen कि हमने यहाँ पे click out किया. तो so can you change it or not? Then we see here Git and GitHub title is already changed. Okay. So this is all the changing that we are add on it. So we just to check कि जेन्युइन में हमारे गिटहब प्लेटफॉर्म पे चेंजेस हुए हैं या नहीं. तो सो वी चेंज लुकआउट की हम चेक करते हैं ट्रांसलेटर ऐप. दिस इज आवर द translator AI. ठीक है, we have changes on it the right now. So we have seen we are recently changes we are changing our project title name 1 मिनट पहले. दिस इज आवर चेंजेस. तो हम इन चेंजेस को यहाँ पे गिटहब प्रोफाइल पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या अंदर में उसको अंदर में हमने changes किए. तो all the things is here. We are changing our project title name, updated the new branches, update the index html, everything like that we are adding. And the thing is कि यहाँ पे आप लुक आउट कर पा रहे हो चीज़ों को कि हम क्या प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे. तो ऑल द थिंग्स आर हैव. देन वी हैव जस्ट टू क्लिक ऑन इट कि हम इसको चेक करें कि लाइक दैट कि लाइव सर्वर पे चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए. तो सो वी जस्ट टू चेक ऑन इट. देखिए this is our live server, and this git and github is changeability. And we are trying कि हम break language barrier को changes करते हैं. ओके, तो we just to click on the copy and paste, and then we कि हम ये कहाँ पे हैं. ओके, तो find out our the name कि exactly कहाँ पे available है. I think we have not in this file. Okay, so we have changes about now the name about the projects translator AI. Okay, then again we have changes our name translator AI. Okay, again then we are changing it, then remove it, same, then we save our project, then we go on vas control. Okay, okay, git इनिशलाइज आवर प्रोजेक्ट. जो हम प्रोजेक्ट्स में इनिशलाइज कर रहे हैं मतलब ट्रांसलेटर एआई को हम कमांड कर रहे हैं कि अब हमारा इनिशलाइज हो प्रोजेक्ट. देन दिस इज इनिशलाइज प्रोसेस. देन गिट ऐड जो हमने ऐड किए हैं अभी के डेट में. ठीक है, गिट कमिट hyphen m, and then m the meaning about message about your project you can change on it. So we are updating our project title
name again, then just to change it only. Okay, then we just to click git post. So it's a successfully changes our code on a platform. तो we see like that कि हमने क्या changes हुए हैं या नहीं. So just to refresh and see. Yeah, this is under process ending में. Then after the few second, this process is done. So we are updating our project title name again. Then we change again. Yeah, successfully deployed हो गया हमारे systems को. Then we can check like live server. So just to click on it and then see. Git and GitHub पहले था, but right now his name is translator AI हो गया. So this is the process that we can the git initialize our project, git add our project, and basically git is a tool, version control system, where you can just to manage your code base and details कि आप कैसे उसको execute out कर पा रहे हो और कैसे नहीं आप कर पा रहे हो. Then I show my screen again. ओके, तो देन वी हैव नो कि हम कैसे गिट के ऊपर में एक प्रोफाइल को अपने गिटहब को पोस्ट करते हैं, गिट कमिट करते हैं, गिट ऐड करते हैं. देन नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि गिटहब प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं. दिस इज द सिंपल प्रोसेस. देन वी हैव स्टार्ट अबाउट कि आई थिंक मैं अपना स्क्रीन अगेन शेयर आउट करता हूँ फिर से एंटायर स्क्रीन. तो so we just to search GitHub. This is how the first process कि हम कैसे create करते हैं. तो just we go on it GitHub profile. So this is the user interface about the official GitHub page. There are the two section. First section is about the sign in and sign up. We have already logged in it, so we just to click on sign in and user ID and password डाल के आप login it कर सकते हो. थ्रू द गूगल्स के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हो. बट इन प्रिपेयर आई हैव ऑल्सो कि अगर नहीं क्रिएट किया तो जस्ट टू प्रोसेस तो आप गूगल के थ्रू ही कनेक्ट करो. दैट इज कैन सेव योर ऑल द डाटा इन अ फ्यूचर. तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, जो आपका यूजर्स नेम है पासवर्ड है आपने यहाँ पे क्लिक इट किया तो ये लॉग इन हो जाएगा. तो वी हैव द सेम थिंग्स अप्लाई ऑन इट. जस्ट 1 minute. ओके, GitHub. This is our my dashboard. So I'll sign out my. Okay, okay, मैं again sign in करने का try करता हूँ. This is my Google. So just to add about the my Google account. Yeah, link account. Okay, then verification code. Go on your Gmail. So check क्या कोई मेल आया है. आई थिंक 1 and 2 minutes समथिंग करके इसका प्रोसेस लग जाते हैं मोस्टली. Sign up for another. Sign with this. Okay, I have already created a 2 and 3 account, so I will say my main account Kumar. Okay, this is my main account. That after you log in your GitHub, so this is the process that you can create your account. And then we are going to another section. Okay, then we already discussed about the git commit, git branch, git repository, how can you create your repository. And we have also discussed the branch and discuss about the commit, post and pull and flow of GitHub. And I think one thing that I have always told to students and developers key use like how can we understand GitHub and Git. The
The thing is simple, like you are a student uh, and आपको अपने कॉलेज पहुंचना है. Then how is the main process, आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हो. Then after you just to start your home, तो आप घर से जैसे निकले, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस लाइक दैट. गिट इनिशलाइज, आपने रेडी होके इनिशलाइज हो गया. देन आफ्टर यू गो टू बाइक या कुछ भी आपने एक वे लिया जिससे आप ट्रेवल कर रहे हो लाइक दैट. तो आप उस ट्रैवलिंग में जो ऐड कर रहे हो, लाइक अपने फ्रेंड्स को ऐड कर रहे हो, कोई बाइक, कुछ भी चीज़ों को ऐड करो. दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस अबाउट द एडिंग. तो दिस इज द प्रोसेस गिट ऐड. देन आफ्टर आप उस गिट ऐड करके आप किसको जा रहे हो, किस साइड में जा रहे हो. तो आफ्टर आप कॉलेज जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, तो हाउ कैन इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए आप उस मैसेज वहाँ पे छोड़ोगे. तो हम स्कूल जा रहे हैं तो वी आर मेंशनिंग ऑन इट गिट कॉमिट मैसेज अंडर. मैसेज के अंदर हम लिखेंगे कि वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग टू कॉलेज या वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, समथिंग लाइक दैट. देन आफ्टर वी पोस्ट, हम उस जगह पे पहुंच गए. अगर मैं और मेरा दोस्त वहां पे पहुंच गए, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट. तो दैट इज द थिंग दैट आई ऑलवेज टोल्ड टू माय स्टूडेंट्स कि आप इस प्रोसेस को माइंड में रखो कि घर आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, एंड आपका डेजिग्नेशन पॉइंट हो गया, आपके कॉलेजेस हो गए जहाँ पे आपको पहुंचना है. जो बीच में आप ऐड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को ऐड करो, एनीथिंग ऐड कर रहे हो, वो गिट ऐड हो गया. और इन्फॉर्म आप कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, वो आपको गिट कमिट हो गया. Then after, we have already discussed the Git setup and configured about the GitHub and how can create your GitHub account, initialize repo, pushing the code. We have already discussed on it. And the next step about the GitHub. I have already discussed कि GitHub पे हमने कैसे कैसे काम करते हैं. तो GitHub is the web-based platform that we provided the space where you can collaborate the different projects. And the simple thing is कि GitHub आपका एक प्रोफाइल है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोड को स्टोर कर रहे हो. अनलिमिटेड कोड को आप स्टोर कर रहे हो, और आप वहाँ पे अपने कोड को एक प्लेस पे रख के उसको एग्जीक्यूशंस भी कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, या मल्टीपल्स पीपल्स कोलैबोरेट करके या तो सिंगल प्रोजेक्ट पे इजिली काम कर सकते हैं. दिस इज द ग्लोबली बेस्ड प्लेटफॉर्म, लाइक कि आप गिटहब के बिना एज अ डेवलपर वी आर नॉट लाइक अ, if you are not know about the GitHub, then I think you are not a developer. This is the thing that always the uh, developers are telling. So we are suggesting to use the GitHub profile and then explore on it. The next thing is keep fork. This is the best thing about me. Multiple times I am seeing the multiple developers project, and sometimes I forget the things ki how can I explain, या how can I remember the things. So I decided like now कि I'm forking या copy. Forking is we are just to copying the same things to another developers, to remembering the things, remembering the code space, everything दैट आर सिमिलर. जो एक मिरर इमेज आप क्रिएट कर देते हो सेम प्रोजेक्ट्स का विदाउट द मल्टीपल स्पेस क्रिएट किए हुए. वी जस्ट टू क्लिक अ सिंगल बटन एंड देन वी एग्जीक्यूट ऑन इट. तो लाइक दैट आपने प्रोजेक्ट्स पे गए, किसी का प्रोजेक्ट है, जस्ट टू क्रिएट ऑन इट फॉर, एंड इट्स अ प्रोजेक्ट इज कॉपी. आई हैव शेयर माय स्क्रीन एंड शो द प्रोसेस कि हाउ कैन वी do that. So we're searching about another project, any papers like that now. I think I'm just open my GitHub and we try कि कोई person follow करता है, then we try कि हम उनका projects complete करते हैं like that. Himanshu. Okay, I think Adi is the word. Okay, Himanshu's amount the 123 projects interview translator summarize awesome generative AI. Okay, so we just to try ना, we are forking this project to our visible. And उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने प्रोफाइल पे, लाइक कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट मेरे प्रोफाइल पे नहीं आपको विजिबल हो गया है. 88 project is visible on my platform. Okay, so just to fork on it, just click a single click. Okay, okay, the thing is awesome repository है, same thing like that. We just create fork. Yeah.
Great. This branch is up to date itna itna itna, and we have checked our platform just to refresh on it, and so कि क्या हो हमारे पास आया है या नहीं आया हुआ. ओके, वी आर fork on it. Himanshu, awesome. Okay, we just took on awesome generative AI. Okay, great. So this is the project that we are for. This is the same project जो हमने अभी प्रोजेक्ट्स को फॉरवर्ड किया हुआ था. जस्ट वी आर सर्च ऑन इट. क्या इस नाम से मेरे प्रोफाइल पे आया है या नहीं. वी हैव सर्च ऑन इट. या सीन इट. ये मेरे प्रोफाइल पे ऐड ऑन इट हो गया कि सेम प्रोजेक्ट विदाउट द एनी कंपोनेंट चेंज हुए. कोई भी profile will be include the readme file. Everything is up to date. The same profile from कहाँ से लिया गया. हिमांशु. जो हिमांशु का प्रोजेक्ट है सेम प्रोजेक्ट हमारे प्रोफाइल पे शो ऑन होने लगा. लाइक दैट द रिमेम्बरेंस के इस बंदे ने क्या क्या काम किया क्या क्या हुआ है. एवरीथिंग्स लाइक दैट हियर. अगर in case in a future he is changing on it, then definitely show the up to date but not the repo section. आफ्टर द सेक्शन वी जस्ट शो कि हाँ उसने चेंजेस किए ये चीज़ हुए, बट आपको कंपोनेंट फिर से इंस्टॉल इट करना पड़ेगा. तो दिस इज द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग. गिट पुल रिक्वेस्ट द सेम इज द पुल रिक्वेस्ट कि आप पुल रिक्वेस्ट कैसे. ए पुल रिक्वेस्ट इज लाइक टू आस्किंग योर टीम टू लुक द चेंजेस वी हैव मेड इन अ सेपरेट वर्जन. जो इन केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि in case they are in a single project they are working the multiple papers. So the thing is कि if person 1 is working and person B is also working and person C is also working, but person A is the owner and person B and C is a like a contributor, then he doing the changes on code and then share on it person A. Then after person A is the reviewing on it, and then after finalize the projects and after the correct, then he do simple things pull request. Then after the pull request the changes will merge on it the master branch. The if they are the feel good about the work they can be manage your code with their मतलब इनके सिमिलर पर्सन. अगर आपको कंफर्टेबल लगता है चीज़ों को लेकर देन देयर इज सिमिलर थिंग्स वो काम हैंडल कर सकते हैं सेम थिंग्स. Then quick demo about the forking. Forking is a simple thing. We just to create on it the another project on your project. And cloning. What is the cloning? Cloning is like that. No, you are copy you to another project to in your desktop like that. We are do that. We just to I just share my screen again. तो सो वी आर ट्राइंग कि हम इसको गिट क्लोन करते हैं कॉपी करते हैं. वी जस्ट टू क्लिक ऑन इट https. We just to copy this url and go to this section. This is our project file section. We just to right click open our terminal and just write here git clone and paste the copy code and just to enter on it. Okay, yeah. तो रिसॉल्विंग द डिटेल्स 100% डन हो गया. देन वी हैव सीन ऑल फाइल हेयर. जितने हमने चेंजेस किए थे जितने हमने उस कॉपी को कोड किए थे एवरीथिंग इज हेयर इन दिस प्लेस. Okay, then we have discussed all these things. Okay, quick demo. We are accepting the url request. Okay, what is the open source in this all the things. If you are doing a git and github, so github is the tool where the multiple developers deploy their projects
in a different domain like a cyber security, like a web development, app development, everything's. So in case there are the multiple bugs in their project, though that can providable by the software developers कि आप आओ हमारे projects को देखो and then fix it and contribute our projects. So I have already contributed the multiple projects like that now. So I have shared my like my panel again to you. So recently, I have developed the official website of NIT Delhi. So I will share my one contribution toward the Commonwealth also, and we are contributing models. Yeah, just to open it. बेसिकली इन ओपन सोर्स वी लाइक दैट कि आप उस जगह पे अपने प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हो कि इनकेस एनीथिंग मिस हैपनिंग ऑन इट देन वी जस्ट टू फिक्स इट. I think due to some network issue, I think I'm not be okay. Contributed to Commodus. मैंने recently Commodus के अंदर multiple contributions हमने provided किए थे, तो we all are here in a providable the section जहाँ पे हम contributes करते हैं open source projects के ऊपर कि हाँ इसमें issues हैं, we are fix on it and we are add on it. So this is the place where we can just show the profile कि हाँ कौन से पर्सन ने कितने कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइडेड किए थे और दिस ग्रुप इज द लाइक दैट इतने कंट्रीब्यूशंस इन दिस प्लेटफॉर्म. तो दिस द थिंग्स दैट वेयर वी आर contributing to our our solution to their projects. So the my name is also here. Okay, so we go on it to PPT section again. Okay. So this is the open source. Transparency, community engagement, development, and freedoms to customize their developer ethics and developer ecosystem also. So here is the some like open source competitions, open GSOS होते हैं every times, and GitHub is also be or organizing their open source and hack to Belfast. And recently GDZ IGDT is also opening their open source community where you can also contribute your projects and learn lots of the things. So this is the whole things about the Git and GitHubs. Wind up कर दें? Yeah, sure. Yeah. Thank you so much, everyone, for inviting me, and thank you so much for your team, Level Up event, and thank you so much, Jad, to provide these opportunities. Okay, bye bye. Take care. Good night. Yeah, thank you. Thank you so much, Alok. We really appreciate how you broke down such complex problems for us. And for those of us just starting out, that perspective is gold. We really appreciate you making these complex topics feel so reachable. Yeah, thank you so much. And thank you once again for an inspiring evening. And to all our audience, keep practicing, keep asking questions. And we all will see you on Tuesday